आज हम बात करेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन के बारे में। आइडियल सोल्यूशन क्या होता है? अगर हम बात करें आइडियल सोल्यूशन की, तो वैसा सोल्यूशन जो रॉड्स लॉ को ओबे करता है आर कॉल्ड आइडियल सोल्यूशन, और वैसा सोल्यूशन जो रॉड्स लॉ को ओबे नहीं करता है उसको हम कहेंगे नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो चलिए हम जानेंगे व्हाट आर द कंडीशंस फॉर आइडियल सोल्यूशन एंड व्हाट आर द कंडीशंस फॉर नॉन आइडियल सोल्यूशंस। ओके, सो ideal and non-ideal solution. Non-ideal solutions. तो हमने क्या कहा? Such solutions which obey Rolle's law. Rolle's law. Here, the Rolle's law case number 1 as well as case number 2 are called ideal solutions, whereas those which do not obey Rolle's law are called non-ideal solutions. Okay. तो जो सोल्यूशन रॉल्स लॉ को ओबे करते हैं that are called ideal solution, and which do not follow Rolle's law are called non-ideal solution. So what should be the conditions for the ideal solution and what should be the condition of non-ideal solution? उसके examples क्या है, एक एक करके हम देखते हैं। तो ideal solutions, conditions for ideal solution. ओके, आइडियल सोल्यूशन जो कि रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं उनके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं? तो कंडीशन नंबर 1, इट शुड ओबे रॉल्स लॉ केस नंबर 1. तो व्हाट इज द इक्वेशन फॉर द रॉल्स लॉ केस 1? दैट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट. मींस आइडियल सोल्यूशन मस्ट ओबे दिस इक्वेशन. ओके, इट विल आल्सो ओबे the Rolle's law case number 2 equation. Means total vapor pressure of solution is equals to partial pressure of individual components. It means that when two different solvents are mixed together, then the total vapor pressure of solution is equals to partial pressure of individual components. Okay. For ideal solution, we have enthalpy mix is equals to 0. Enthalpy mix is equals to 0 means what? If two different pure solvents, suppose that we have a container, okay, and we are mixing two different solvent A and B. Okay, so after that solution C is obtained. Okay, so before mixing solvent A and solvent B, okay, before mixing solvent A and solvent B, there must be enthalpy there must be some heat in form of internal energy in A and B. Okay, so when these two different solvents are mixed together and C is formed, then no heat should be absorbed or no heat should be released. It means the enthalpy mix 0 also defines that enthalpy in final state should equals to enthalpy in initial state. Means the initial and final enthalpy should be equal. One more conditions which is followed by the ideal solutions are volume mix is equals to 0. What is the meaning of volume mix? Suppose that we have taken 5 ml of A and we have taken 5 ml of B. So
The initial volume 5 plus 5, 10. After mixing, the C should be 10 ml. So you will say that, sir, if we mix and if we add 5 plus 5, it will become 10. Of course it will become 10. But it will become 10 only when the nature of solvent A and solvent B both are equal. It may be the possibility that the resultant volume is greater than 10 or resultant volume is less than 10. But for ideal solution, the initial volume should equals to the final volume. These are the conditions, means V final should equals to V initial. Okay. So these are the conditions are fulfilled when we see certain conditions in you can say in molecules present or in molecules obeying Raoult's law or the molecules which are obeying ideal solutions. Okay. So what are the conditions we follow and what are the condition is observable condition we see. If a solution is obeying Raoult's law, if a solution is actually ideal, there must be solute-solute interaction, solute-solute interactions equal to solute-solvent interaction, solvent interactions. मतलब जैसा फोर्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूट मॉलिक्यूल के बीच में है, सपोज हमारे पास सॉल्वेंट ए है, सॉल्वेंट बी है, तो जैसा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्वेंट ए के मॉलिक्यूल में है, जैसा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्वेंट बी के मॉलिक्यूल में है, ये दोनों एक दूसरे के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में सिमिलैरिटी शो करते हैं. मींस इनका मॉलिक्यूल का फोर्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल होना चाहिए बी के मॉलिक्यूल के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से. यानी कि सॉल्यूट ए या फिर सॉल्वेंट बी, दोनों में से किसी को भी सॉल्यूट सॉल्वेंट मान सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी. ऐसा नहीं होना चाहिए कि ए में डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, बी में डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है. दोनों में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. तभी वो क्या करेगा? रॉल्ट्स लॉ को ओबे करेगा, अदरवाइज ओबे नहीं करेगा. These are the situations we generally observe in non-polar molecules. Non-polar molecules or non-polar solvents. Example. Best example. Petrol. Petrol means octane. C8H18. And kerosene. Kerosene means dodecane. C12H24 and 26. 26. For haloalkanes we can say, suppose that we have bromoethane and bromopropane. So here we can say that the number of carbon atom only changes, molecular mass only changes, but the kind of intermolecular forces is similar, both in case of kerosene and petrol as well as in bromoethane and bromopropane. So these are the conditions which an ideal solution obey, and following conditions are necessary for any solution so that it should be called an ideal solution.